Assalamu alaikum everyone. I'm Sana Zafar and you are watching Stars of NUST. हम आपको मिलवाते हैं NUST के ब्रिलियंट ग्रेजुएट से फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब और आज के स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम दुबई. हमारे साथ हैं मिस्टर हारून रईस. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. वालेकुम अस्सलाम. सर हारून ने NUST से ग्रेजुएट किया back in 1996 when he completed his degree in Telecommunication Engineering from Military College of Signals. Currently, he is Customer Success Specialist at Cisco Systems. आइए इनसे मिलते हैं. थैंक यू सो मच हारून भाई आपके टाइम निकालने का. हम रीस्केड्यूल करते करते फाइनली टुडे वी आर सिटिंग डाउन एंड हैविंग द टॉक. आई एम वेरी ग्लैड. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया और आई अपोलोजाइज कि हमें बहुत टाइम लगा. ऑलमोस्ट 2-3 महीने लग गए टू ट्राई टू फिगर आउट टाइम बिकॉज आई रिसेंटली शिफ्टेड. आई वाज इन अ मूव सिचुएशन व्हेन यू कांटेक्टेड मी. तो अब आके कुछ थोड़े से हम घर में अपने साथ we are able to not at all. You have been very kind. Thank you. बताइएगा आप रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं दुबई फ्रॉम सऊदी अरेबिया. हाउ इज इट? अब आप सेटल हो गए हैं. हाउ इज इट विद द फैमिली? जी सेटलिंग तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. यू नेवर फील लाइक आप सेटल होते हैं 100%. लेकिन इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. फैमिली के साथ मूव होना थोड़ा सा टफ होता है. मैंने पहले भी लाइफ में मूव्स किए हैं लेकिन बच्चे उस वक्त छोटे थे तो इट वाज नॉट दैट टफ अ डिफिकल्ट चैलेंज. नाउ जैसे जैसे बच्चे आपके बड़े हो रहे होते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं तो there are many things that you have to take care of when you move. Yeah, definitely. You have mashallah 4 kids. How old are they? जी अल्हम्दुलिल्लाह. मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है इज ऑलमोस्ट 18. इंशाल्लाह शी विल बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी सून. उसके बाद देन आई हैव अ 12-year-old son who is in grade 7. Then I have a 7-year-old son and a 4-year-old daughter. They are in school. माशाल्लाह. ठीक. So how is Dubai? How do you finding? I mean, सऊदी अरब से कितना डिफरेंट है यहाँ पे? फ़र्क तो ज़ाहिर बात है. ऑफ कोर्स जनरल एनवायरनमेंट में और लोगों के मिलने जुलने में फ़र्क है. एज लॉन्ग एज इट कम्स टू योर सेल्फ तो वो आपको मतलब यू कैन सेट योर ओन लाइफ स्टाइल, ओन वे ऑफ लिविंग ओवर हेयर. सो इसलिए ज़्यादा महसूस नहीं होता. ऑल्दो सऊदी अरब में आई स्पेंड ऑलमोस्ट 14 years. सो उसके लिहाज से इट्स अ बिग चेंज. यहाँ पर it's more of a metropolitan type environment over here. मैं रियाद में था. रियाद ऐसे तो बहुत बड़ा शहर है लेकिन it was like a very somewhat quiet and peaceful type of a town. छोटा है लेकिन it has a metropolitan vibe. Yeah, definitely. चलिए हम थोड़ा सा आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में पूछना चाहते हैं, आपकी मेमोरीज के बारे में पूछना चाहते हैं. लेकिन सबसे पहले आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट योर हॉबीज. यू आर माशाल्लाह इनटू फ्लाइंग. उसके बारे में बताइएगा कुछ. बचपन से ही जैसे मेरे ख्याल में बहुत से मेरे जैसे जो मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं सबको बचपन में पायलट बनने का बहुत शौक होता है. और वक्त के साथ साथ हालात समहाउ हमारे जब हम छोटे थे हमारे पास ये कि चॉइस ऑप्शन थी कि हम या तो जीडी पायलट बन जाएं. इफ यू आर एबल टू गेट सेलेक्टेड इन एयर फोर्स फाइन, अदरवाइज यू डिडंट हैव मच ऑफ एन ऑप्शंस. अगर आप कमर्शियल फ्लाइंग की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी लिमिटेड ऑप्शंस थी और उसमें भी मतलब इट वाज अ बिट एक्सपेंसिव. दैट यूजुअली वाज अ टफ थिंग टू गेट इनटू. तो एक शौक था. तो जब 2015 में रियाद में ही आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि जी एक फ्लाइंग स्कूल खुला है. तो दे आस्क्ड फॉर अ डिस्कवरी फ्लाइट. यूजुअली फ्लाइंग स्कूल्स क्या करते हैं कि डिस्कवरी फ्लाइट के लिए आपको बुलाते हैं. दुनिया में हर जगह ऐसा ही है ऑलमोस्ट. And then they ask you whether you like it, would you like to continue. So I was hooked on my first flight. उसके बाद then I started part time, ground schools, single engine planes होते हैं in the air. It took me almost 1.5 years to complete my private pilot certification because I was not full time. जब भी time मिला उसमें जाके मतलब flying की early mornings, sometimes late in the evenings, after office, because you have to basically maintain work-life balance over there as well. So alhamdulillah, in 2016 I was able to get my private pilot license. साथ साथ फिर मुझे मौका मिला थोड़ा सा कुछ दोस्त ऐसे मिले उनके साथ मिलके रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग करने का मौका भी मिला विच इज स्टिल ऑनगोइंग. जो एक्चुअल फ्लाइंग है वो बड़ी लिमिटेड है. वो अभी यहाँ पर दुबई में आया हूँ तो अभी आई डिडंट हैव चांस टू एक्सप्लोर दैट. लेकिन रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग इज समथिंग दैट आई एम आल्सो
also doing as part of the hub, which is a bit more cheaper as compared to the lecture flying. अच्छा, बहुत मजे की हॉबी है आपकी, and I'm really glad कि with work and everything you manage it so well, माशाल्लाह, and you are enjoying it. So थोड़ा सा बताइएगा, अभी हमारा लेटली चैप्टर स्टार्ट हुआ है NUST Alumni एसोसिएशन का इन सऊदी अरेबिया एंड यू आर द प्रेसिडेंट. उसमें क्या क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा कुछ शेयर कर सकें. As a हमने start as a मैं MCS से हूँ, तो we started like participating in the Signalian alumni over there. वक्त के साथ साथ हमें एहसास हुआ कि माशाल्लाह सऊदी अरब में alumni काफ़ी मौजूद है from different schools. So we started connecting them together. We were like, we started from a WhatsApp group, as nowadays most of the things that start in that way. और last year हमने उसको थोड़ा सा organize किया and we got it endorsed from NUST headquarter as well. तो अब जो है हमारी 7 NUSTians की executive body है, और साथ साथ हमारी multiple working committees हैं for different focus, charity, donations, events. We have a committee for women as well, although not very active. We are trying to basically make it more active. Business development committee, which is very active. फिर हमारे सऊदी अरब क्योंकि काफी बड़ा है, तो we have regions, so we have regional committees as well. Main maqsad, the way that we are performing, we are basically a volunteer organization. We are trying our level best. We as a white collar workforce in Saudi Arabia, we provide as much impactful service to our our community over there. We are very much closely working with Pakistan Embassy over there, different other volunteer organizations. We have a doctors group over there, very active. We are a very active technology partner for them. They had a medical camp where we provided recently a complete digitization solution for them. इसके अलावा वहाँ पर जो हमारी blue collar workforce है, whenever they need any help, we try to do facilitate them in our capacity whatever we can. इसके अलावा giving back initiatives में हम पाकिस्तान में we are working on 2 major initiatives with NUST need-based scholarship. We are currently supporting about 15 zakat-based students for their full-time education needs. Plus, we are working more on enrollment right now. It's not started, but inshallah, we're going to start that pretty much soon. All the paperwork is almost done. Then, जो school-going बच्चे हैं, grade 12 and below, उनके लिए हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं. एक हमारे ही कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी और कुछ alumni members हैं who started a school for needy children. So we are sponsoring about 120 children over there. Main service what we are doing is a service to each other, right? That the moment we started to get ourselves organized, specifically in the time of COVID and stuff, we were doing a lot of educational sessions, knowledge sharing sessions virtually. That actually helped us connect a lot among each other. Whenever anyone has a problem, all what they need to do is send a message, and always there is somebody who has experienced the same situation and they can help each other out. And that, I think, is the biggest service we are doing to ourselves. And once people, we have seen when we see our internal impact, so we started working outside. Why not? We basically help others as well. Inshallah, we are expecting soon, based on the time, we are expecting, inshallah, Rector NUST, Prorector, and the UAE office to visit Riyadh in Saudi Arabia, Riyadh, Jeddah, and maybe some other city as well. So we are looking forward to that visit as well, and trying to basically help them connect with the industry, with the influencers over there, with the alumni, with the community, with the parents. Because a lot of community members have children who are about to go to university, so we're trying to connect them with them as much as we can. So that's in short, I think a long discussion, but that's what it is.
नहीं डेफिनेटली माशाल्लाह, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि ये बहुत लेटली स्टार्ट हुआ है एंड स्टिल यू गाइस हैव कम अ लॉन्ग वे। मैंने आपका एक वर्चुअल सेशन अटेंड भी किया हुआ है जो जोहेब ने अरेंज करवाया था। यू गाइस आर वेरी एक्टिव एंड ऑलवेज पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर डूइंग इट, एंड आई रियली नो बिकॉज अभी यूरोप में ऑर्गेनाइज चैप्टर नहीं है और अभी हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिंग देम टुगेदर, और वही कितने एफर्ट्स लेता है, हाउ टू वेक पीपल अप के कम ऑन पार्टिसिपेट एंड ऑल, वही इतना ज्यादा है। माशाल्लाह आप लोग काफी कुछ अचीव कर चुके हैं, सो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई एम रियली ग्लैड के हो रहा है उस इसमें पार्ट में भी। हम लोग भी, मतलब मैं अगर पर्सनली अपने आप को देखूं कि वी हैव लर्न मैनी थिंग्स। हमारी एक तरफ आई थिंक थोड़ा सा इन पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग वी आर प्रीटी मच लोन रनर्स, राइट? वी हैव अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन आवर इंडिविजुअलाइज्ड मैनर एंड माशाल्लाह वी हैव वेरी सक्सेस स्टोरीज इन दैट। लेकिन ओवर टाइम यू रियलाइज के एक सिंगल आदमी का जो इम्पैक्ट है ना, वो ऑफ कोर्स उसकी ज़ात तक ही रहता है, और बहुत कम ही अब्दुस्तार ईदी होते हैं, बहुत कम ही जो है बेसिकली बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। हम जैसे लोग जो कि मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ऑल व्हाट वी कैन डू अनटिल we partner with each other, we collaborate, we synergize our knowledge, our efforts. We cannot basically bring a major impact to our society, or that is a missing thing that we notice in many different cases. तो कोशिश हमारी यही रही कि अपने अपने जैसे लोग जो हैं, हम सीनियर जूनियर, हम इकट्ठे हों और मिल के कुछ लोगों के लिए कर सकें, अपने लोगों के लिए कर सकें, और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। वी कैन गिव बैक टू आवर पाकिस्तान बेसिकली। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ आप लोग चल रहे हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर एफर्ट्स माशाल्लाह। थोड़ा सा आएंगे प्लीज आपकी एमसीएस के टाइम पे, कोई फन मेमोरीज हमारे साथ शेयर करें, कोई प्रैंक्स और गेटिंग आउट ऑफ रैगिंग और समथिंग लाइक दैट। प्लीज सिर्फ हमें से आप रूल्स का ना बताइएगा, कुछ और भी बता दें। वेल वो जो 3 साल थे इन एमसीएस, or honestly I cannot forget them. I think those are the memories which are properly unmarked on your in your brain. Although मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा ये है कि जब मैंने ज्वाइन मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिसालपुर फर्स्ट for at least 1 month, and later on I moved to MCS. MCE was very tough in terms of ragging and physical activity. जब मैं इधर MCS आया तो यहाँ पर उस जमाने में थोड़ा सा somehow because of some past history, ragging was not as much as we had in MCE. लेकिन इसके बावजूद भी ऑफ कोर्स वो जो एक आप चीज सीखते हैं किसी भी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप अमंग योर कोर्समेट्स, रिलेशनशिप विद योर जूनियर्स, दैट इज एक्चुअली इज आई विल से कि ये जो एक लर्निंग है कॉमरेडशिप की, ये यू डोंट गेट इट इन एनी प्राइवेट स्कूल. Yes. And that learning of comradeship is actually helps us organize afterwards. हम कहीं भी चले जाएं और all somebody has to say कि I am coming from this specific school or this specific year. That's enough for us to basically open up and offer our services, offer our help, connect whatever we can do. So that exactly is the main main memory. इसके अलावा तो हम जब कैडेट थे तो शरारतें भी बहुत की, रगड़े भी बहुत खाए. एक बड़ी कॉमन सी फन मेमोरी मैं शेयर करता हूँ, जो कि देखें, whenever we in a course, if any one of us will do a mistake, our whole course will be punished, right? And that's used to build the real coursemateship among ourselves. तो ऐसे हुआ, समथिंग हैपन विद टू ऑफ आवर कोर्समेट्स, एंड उसकी वजह से हमें अच्छा खासा रगड़ा मिल रहा. तो थोड़ी देर के बाद जब देखा कि हम पूरा कोर्स जो है वो तो रैगिंग रिसीव कर रहा है, लेकिन वो दो जो हैं वो मेडिकल एक्सक्यूज लेके खड़े हुए. द होल कोर्स इज उन्हीं की वजह से, और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं. तो एनीवेज ये इस तरह के बहुत से वाकयात हैं. और ऑफ कोर्स जब हम कोर्स में इकट्ठे होते हैं तो मतलब द फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट, वी हैव सो मेनी मेमोरीज टू शेयर एंड रिमेंबर अमंग ईच अदर. आई थिंक ये अंडरग्रेड की मेमोरीज तो दे नेवर गो अवे, और स्पेशली जो आपने बात बताई कि ये कहना काफी है कि कौन किस कोर्स से है पूरे नास्ट में, ओवरऑल किस कोर्स से है, किस ईयर से है, किस कॉलेज से है, इज इनफ. दिस इज द मेन बेसिस जिस पे हमारा चैनल चल रहा है.
because people Yeah. don't know each other, people don't know me, but they're just so kind that they know I'm a NUSTie, and that's enough for them to respond and be there. So yes, Allah ka shukar hai, NUST does have that power and that spirit for sure. तो सब आपकी प्रोफेशनल जर्नी पे आते हैं, प्लीज बताइएगा आप NUST से ग्रेजुएट किए और फिर आप सिस्को सिस्टम्स तक आ गए, इस सबके बीच में क्या हुआ? वेल आई विल नॉट से कि कोई इतनी एक्साइटिंग किस्म की जर्नी थी मेरी, जो कि एक होता है ट्रायल एंड एरर टाइप सिचुएशन थी इन माय केस. जैसे आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो यू नेवर नो इन विच डायरेक्शन यू वांट टू हेड. टू बी ऑनेस्ट विद यू, यू आर नॉट रियली क्लियर. बट आई विल से कि NUST में और MCS में वी वर अ बिट लकी. आर कोर्स वी वर द फर्स्ट डिग्री ऑफ NUST. MCS की पहली डिग्री जिनको पहला कोर्स जिनको NUST की डिग्री मिली थी. So we were actually out in the industry in about 3 years. We were ahead of our class fellows from UT Lahore or UT Texla or other Pakistani universities. So we had that one advantage, with us. The internship we got very lucky that we had a mandatory internship at the end of our degree, which actually helped me get into the job. So just company se maine internship ki usi mein, then I was able to continue my job. That was a startup company called Supernet. At the time it was startup. Now alhamdulillah it's a very established organization in Pakistan. Uske baad then after working with them for about 2 years, I moved to Saudi Arabia. In Pakistan I was working on launching internet, and then I went to Saudi Arabia. They were in a process of launching internet, so I worked with another startup company for about 1.5 years. Then I moved to US. वहाँ पे मैंने 2 कंपनीज के साथ जॉब की, कुछ अरसा सिस्को के साथ as a contractor, and then I moved to a major service provider over there called Verizon Wireless. वहाँ पे मतलब it was a very exciting experience over there. Then 2007 में I moved from US back to Middle East, and then I went to Saudi Arabia and I joined Cisco Systems. और वहाँ पे about 14 years serving in Saudi Arabia in Cisco. I moved here to Dubai now, still with the same company. So कोई इतनी ज़्यादा कोई exciting journey नहीं है, मतलब you just pretty much do your job, improve your skills after every 5 years, and then you carry on. I think you're being very modest calling it not an exciting journey. माशाल्लाह आपने 4 कंट्रीज स्विच कर ली, आपने बहुत सब कुछ लर्न कर लिया, उसके साथ साथ इतनी ज़बरदस्त हॉबीज भी हैं और आपने हर चीज़ में एक्सेल किया माशाल्लाह. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, दैट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी. आई एम श्योर पीपल कैन लर्न फ्रॉम इट. आप अपनी इस जर्नी को देखते हुए कुछ शेयर करना चाहेंगे आजकल के स्टूडेंट से, यंगर ग्रेजुएट से, यंगर एलुमनाई से? Well, there's a lot to share, लेकिन मैं चंद एक चीज़ें जो अपने जूनियर्स को, यंग जनरेशन को कहता हूँ, इवन अपने बच्चों को भी कहता हूँ. सबसे पहले कि your attitude counts the most. It doesn't really matter आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, और what have been your past. जब आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो your attitude speaks many things about your. So always have a positive attitude. And second, stop blaming whatever your environment, to be honest with you, and start taking responsibility on fixing things. We as a nation has a habit of blaming a lot, and we learn it very early in our lifestyle, and then it never goes away. अगर आप मीडिया के साथ बहुत एक्टिव हैं तो उसमें this is the way that I see it. And yes, nobody is perfect, to be honest with you. No civilization is perfect. No country is perfect. Everyone has pluses and minuses, but you have to look at the positive aspects of the life. Plus एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है, which is focus and consistency. In our daily lives nowadays, when we have a lot of social media around us, a lot of other distractions, getting yourself focused is the toughest thing for anyone. And if you want to excel in anything, you have to do focus. You have to get your mind and body into focus state. और वो अब आप हर एक की अपनी practices हैं. Sometimes some people are able to focus in the morning. Sometimes people are able to focus in the evening. Whatever is your gig, but that's where you need to do to excel. Intelligence doesn't play that much role than focus and consistency in professional growth. और फिर ये कि mistakes जो हैं वो आप
एक्सपेरिमेंट करें, मिस्टेक्स करें, सीखें उनसे, लोगों को भी मिस्टेक करने दें, लेट देम लर्न आल्सो, डोंट बी जजमेंटल, because doing mistakes is part of learning, and उन्हीं जो लोग मिस्टेक से अपनी सीखते हैं वो आपका लेसन कभी भूलते नहीं है. मैं किसी को जितना मर्जी लेक्चर दे दूं, दैट इज नॉट वैल्यूएबल, लेकिन कोई भी अपने एक्सपीरियंस से मिस्टेक्स करके जो सीखता है, दैट इज अ लाइफ लॉन्ग लेसन. और आई विल से कि जैसे अभी हमने अपने चैप्टर की बात की, collaboration and synergy is very important. हम अब एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं जिसमें हमें डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ, डिफरेंट तरह के रेस एंड रिलीजन के साथ हमें जो है कोलैबोरेट करना है. तो whenever you have a common goal, collaboration is the key. Help each other out, do your part, and if you see somebody is lagging behind, help them out. Because एक और चीज़ बड़ी important है, I will close on that. That is called law of attraction. If you basically do positive activities, you will attract positivity. But if you will think negatively, or if you basically have any type of remorse or any negative feelings towards others, you're gonna attract the same thing back. If you want respect others first. If you want love others first. First. That's how you're gonna basically attract positive energy. So I think these are the things which I will say. Maybe jab I was very young, I was not personally following. Over time, I learned how to improve, and I think that hamari youngsters or young generation, jinko abhi they have a lot of access to knowledge and resources. We were not that fortunate. हमें लाइब्रेरीज नहीं मिलती थी, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं मिलती थी जो हमें पढ़नी होती थी. लेकिन अब आजकल तो जो resources हैं, they are immense. तो लेकिन अगर ये चंद एक हैबिट्स अगर हर कोई फॉलो करे तो I think they can do wonders, and that's what I want to offer my services to whoever wants to get that, help them, clear doubts, what are they doing, and then give them tricks and tips so that they can do much better than us, inshallah. Definitely. Thank you so much. ये बहुत ही valuable tips आपने share की हैं, and that is so true. Lately मैंने भी emotional intelligence पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, and I realized that विलियम जेम्स, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है, वो कहते हैं हम बहुत ही कंस्ट्रेंट सर्कल में अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं, विच मीन्स वी ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू गो वे फार अहेड जिसमें हम गुजार रहे होते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिविटी एज अ प्रोफेशनल इन एनी पर्सनल लाइफ रोल, हमेशा गुंजाइश होती है टू इम्प्रूव, वो मार्जिन हमेशा रहता है. तो उसको पॉजिटिव सोच के साथ लेके चलना इज ऑलवेज देयर. ये बहुत अच्छी टिप है आपकी. और जहाँ आपने ये वाली बात की कि हमारे पास कितनी अब इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है, कितनी एक्सेस है, हम अपनी प्रीवियस जनरेशन से तो कंपेयर भी नहीं कर सकते. इफ आई कैंट कंपेयर माई सेल्फ विद माई पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल, कि उनके पास कितना आसान था कोई भी चीज़ अपने घर में बैठे हुए देखना कि अमेरिका में क्या हो रहा है, व्हाट आर द अप्रोचेस दे यूज देयर एंड एवरीथिंग. इसकी जितनी आपको फायदा है उतना ही ज्यादा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है to make good use of that. So माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टिप्स हैं. I'm sure people will learn a lot from that. इंशाल्लाह. Thank you for sharing those. चलिए थोड़े से फन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, इट्स कॉल्ड अवाम का सवाल, एंड वी ट्राई टू रीच आउट फ्रेंड्स ऑफ आवर गेस्ट्स. और आपके दो फ्रेंड्स ने काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन भेजा था, तो मैं उन दोनों का ही नाम भी लूंगी और क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगी. उमर आज़ाद एंड खुरम मखदूम. जो उमर भाई EME के ग्रेजुएट हैं, खुरम भाई फ्रॉम MCS. उन दोनों ने जिक्र किया कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं. सो खुरम भाई, तो आपकी फरमाइश है कि आप हमें कुछ सुना दें. और उमर भाई ने पूछा है कि क्या आपने कभी इन योर यंगर डेज, आप अभी यंग है माशाल्लाह बट रिलेटिवली यंगर डेज, आपने कभी किसी समवन स्पेशल के लिए कभी कुछ गाया था और फिर क्या हुआ? अच्छा, well, I will say singing, I don't know how it came, how I started, लेकिन बचपन में हम ज़्यादातर नात ख्वानी का मुझे बहुत शौक था, and I was very active in school functions, morning assemblies, नात ख्वानी पे तलावत और इस तरह की चीज़ें बचपन में काफ़ी की.
MCS और MCE में भी काफ़ी मतलब मौका मिला. मैं कहता था कि रगड़े से बचने के लिए I used to sing. That's how it started. That's how it many things that happened. My course mates and my senior juniors have those memories as well, and I do a lot of them as well. फिर अभी हमारा जैसे आपने भी ज्वाइन किया लिटरेली सेशंस जो हुए हैं, तो जैसे मैं बता रहा था कि हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है. मुझे ज़्यादा शेर व शायरी नहीं आती. आपने माशाल्लाह देखा कि माशाल्लाह बहुत ही सर उमर फॉर एग्जांपल ही रिमेंबर्स पोएट्री लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड. फिर वो डॉक्टर राहील हैं माशाल्लाह. खुरम खुद जो हैं बहुत अच्छे मतलब पोइट हिमसेल्फ हैं. मतलब वो बड़ी अच्छी मज़ाहिया शायरी लिखते हैं. तो मुझे I don't know them, I don't know शायरी as much, but I enjoy it. और तो उसमें मेरा टैलेंट ये था कि how can I bring everyone together. That's the first talent कि यार इन सब लोगों को किसी तरीके से virtually connect किया जाए so that we can have more interaction, more learning, more fun evenings actually. और साथ साथ उसमें sometimes I sing as well, जो भी मौके की मुनासबत से होता है. तो आई एम नॉट श्योर वेदर जैसे हमारे दोस्त हैं खुरम, वो बड़े शरारती हैं. उन्होंने बेसिकली जानबूझ के मुझे ही वांटेड टू पुट मी टू अ कॉर्नर. तो शैल आई सिंग और शैल आई जस्ट प्लीज. अच्छा, बड़ा मुश्किल काम है. ये बाद में YouTube पे जा रही होगी तो आई एम नॉट श्योर हाउ पीपल आर YouTube पे तो जाएगी. प्लीज फील होम. अपना ही घर समझे, अपने घर में बैठे हैं आप. जरूर. तो ठीक है, एक मैं छोटी सी गजल आपको सुनाता हूँ, 2 शेर उसके जो कि आई होप आई रिमेंबर. और लेट्स सी हाउ इट गोस. इरशाद. नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया. मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ. वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ. I think थैंक यू that's सो enough. मच. अप्लॉज. मेरे पास ज्यादा ऑडियंस नहीं है, बट आई एम श्योर कि जब देखेंगे तो बहुत महजूज होंगे उससे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड स्पोर्ट. बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत एंजॉय किया मैंने. थैंक यू. अदरवाइज ओवरऑल इंटरव्यू बहुत जबरदस्त बातें की आपने, बहुत यूजफुल एंड वैल्यूएबल टिप्स शेयर की. आपकी जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी. आप जो NUST Alumni एसोसिएशन के लिए कर रहे हैं उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर इवेंट्स इंशाल्लाह एंड मोर कोलैबोरेशन एक्चुअली टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल टू एस्टैब्लिश Europe chapter as well. So thank you so much for all of that. You're most welcome. Thank you very much for inviting me. It was a pleasure and privilege to basically be here. And although आपके just channel का नाम है Star of Nuts, I don't consider myself any star. I'm just a worker of this alumni. And I'm glad that mashallah, after 25 years of me graduating out of the school, mashallah, I see our fellow graduates in very impactful positions, and that's a big pride for all of us as a NUSTian, as a Pakistani, and we want our university to flourish more. Thank you so much. आप, यही तो ब्यूटी है हमारे चैनल की भी, हमारी यूनिवर्सिटी की भी, कि कोई भी अपने आप को स्टार नहीं मानता, बाकी सबको मानता है. सो दैट मेक्स यू अ स्टार बाय डिफॉल्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. Thank you very much. अल्लाह हाफिज.